guys, Assalamu alaikum. Welcome once again on Akhir Kyun. We're finally here. I'm really excited and looking forward to this conversation today with a friend of mine. And let me just bring her in. Okay, just give me a second, guys, please. So it's a very triggering and intriguing topic that my friend chose, and that's one of the questions I want to ask her as she comes in. Why did she choose this topic? And then I hope it's insightful and that we learn a lot from it and how it affects us or how it plays out in our life, in our relationships. And just give me a second. I think she's having trouble joining me, so give me just 2 seconds, please. Hang on. I'm just waiting for my guest to come in, and we will take it from there. Just give me an... Oh, there she is. Okay, let's bring her live. There we go. I just kind of get caught up in making sure that my guest knows how to uh, connect and all. Now that we're set, we're just waiting for her. And there we go. Yeah. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम एवेश। क्या हाल है हाजरा? I'm good। आपका क्या हाल है? I am good. Okay, Hajra, before we dive in our conversation today, thoda sa Yeah. introduction, who you are, where you from, little flavor for the audience. Yeah. So basically, I am from Lahore, and I'm a psychotherapist, a counselor, and an EMDR practitioner also. Awesome. And yeah, and I'm trained both in traditional and trauma-informed psychotherapy. Wow, fascinating. So, Hajra, Thank you. what inspired you to become a therapist, a counselor, and know all kinds of fields around it? Yeah. So basically, I think I lost her. She's paused. Guys, can you message in the chat box if it's my end or her end where we can't see her? I think I lost Hajra. Let me see if I can bring her back. Just give me a second, guys. Hajra, did I lose you? I've lost you. Okay, that's all right. No issue. We can do it again. Make sure that your internet is connected because if that drops, you're gonna, you know. There, Hajra, you're back. Hajra, you keep on declining the
You keep on declining the offer. You need to keep stay on it. Make sure that the internet is connected, and it's okay. We'll get there. It takes a minute, but just accept my invite, and we'll take it from there. Okay? There you go. Now just switch the camera to your face. Yeah, that's what I'm trying. Yeah, and make sure you're sitting where the internet connection is good, so it Yeah, yeah, doesn't. I'm sitting right next to it. Perfect, I think perfect. Sounds good. कोई बात नहीं. If it falls, we'll bring you back in. कोई tension की बात नहीं. We're good. We're just having a conversation here. So Hajar, you were telling yeah. me what inspired you to become a therapist, a counselor. Okay, so Mevish, I feel that I've seen a lot of dysfunctional patterns around me. Okay. In women, especially women, because I work with women mostly, and Okay. who are stuck in dysfunctional relationships at workplace, Mm-hmm. uh, and they just don't know, where to go from there. Mm-hmm. It's just the dysfunctionality, and they're not aware of the reactions that Mm-hmm. are stemming from those patterns learned over time, Right. uh, and they're stuck there. What do you mean You when know, you it's say Hajra dysfunctionality or dysfunctional relationships? Sir, थोड़ा सा इसको elaborate yeah, करो. dysfunctional relationships could be abusive relationships. Right. If we talk about it broadly, it could be abusive relationships, a relationship that doesn't resonate with your sense of self and agency Mm-hmm. and value systems. Right. And women specifically, I will talk about women because that's my niche and that's where I've been working uh, Sure, sure, yeah. with. Yeah. So there's so much helplessness that they just don't know how to, uh, move from being in a stuck place to a place where they can find their growth. They can't find their footing. Mm-hmm. And I will also quote an example that I came across uh, a few months back. Mm-hmm. A girl came to me and she was worried for her mother, who was 75 years old. 75 years old. Mm-hmm. And the mother was asked to host her father's friends and family. And Mm. she was suffering from, of course, at this age, you don't have the energy Yeah. um, to Mm. cater to so many people standing in the Yeah. kitchen and cooking and then Yeah. serving, hosting. It Yeah. takes up a lot of energy. Absolutely. So she was asked to do that Mm-hmm. while she couldn't. Okay. But, she just didn't have the courage to tell her husband that Mm. I can't do it anymore because my health does not allow me. She was hypertensive. She had Mm. diabetes, Mm. multiple issues. And this is Mm. just one example that I'm giving Mm. of a 75-year-old woman. Just see the age. Yeah. I'm sure she was married for a long 40 years or so. Right. And So Hajra, even, when you sorry, go ahead, please. yeah, yeah. So even in those 40 years, she couldn't find her worth out of the kitchen. Mm. And she had to comply to the, rules which were put down by her husband. And she was worried about it, that how Mm. am I going to do it? Because I Mm. can't tell my husband that uh, Mm. I'm unfit to carry I out can't these say no, right? It's responsibilities. that I can't, exactly, it's exactly, that wiring, it's that hardcore wiring, especially in Pakistani exactly. patriarchal culture where women are told, are not told, but they are brought up and raised with this mindset that we're supposed to compromise. We're not supposed to compromise. Actually, we're supposed to over compromise. We're not supposed to say no. It's bad. It looks bad on the woman or the girl to say no. So she kind of
that becomes a part of her identity of who she is, not even knowing that she Exactly, doesn't want that for herself. exactly. Yeah. And this is where her worth had been for so many years. And Hmm. so this is where, learned helplessness comes in from. The Yeah. learned patterns Yeah. uh, that you will be accepted only because of so and so reason. Otherwise, Interesting. you will not be accepted. You won't be deemed a good wife, a good daughter, a good mother. So you Hmm. have to comply to that, rule book. Right. So Hajra, that was how I wanted to actually start the So conversation. But I will just give you an example yeah, sure. of uh, these elephants which are trained for the circus. Right, And right. when they're babies, Mm-hmm. they're chained and they are for the purpose of training. Right. They're chained and they're shackled, and no matter how much they try, they cannot break free. And Mm-hmm. this notion they internalize that we are helpless uh, in the face of this control. Mm-hmm. Yeah. And over a period of time, even when they grow up, uh, Mm-hmm. because this thing is internalized, this helplessness, this powerlessness is internalized, that these shackles cannot be broken. Mm-hmm. So they comply to what their trainer says or commands Right. because it's in their mind. And Mm-hmm. similarly, and the thing is, these shackles, they're invisible. They're Yeah. in our mind. Mm-hmm. And similarly, if we relate it to ourselves or humans, we train our mind to feel helpless. हाँ, It सही is बात है. conditioned over time. Yeah. जेंडर रोल्स होते हैं जिनको कंप्लाई करना होता है और अगर मैं एक इसको लाइक दूसरी तरफ फ्लिप साइड पे देखूं तो Hmm. men men are because it's a patriarchal culture here Right. and men are supposed to be served and looked after no matter how old they are Yeah. और ये Yeah. भी it's a kind of helplessness. Yeah. I think learned happiness एक हमें ये एक थोड़ा सा concept है कि patriarchal culture serves the men also. It does serve the men, but it can't also not serve the men. A lot of men have also been Exactly. victim of patriarchal culture. But coming back again to my question was, um, what made you pick this topic? I remember we were going back and forth and deciding कि क्या बात करें, किस पे बात करें, and you were like very clear, इस पे बात करनी है, बस this is my topic. So पहले I want you to answer this. What made Hajra want to talk Hmm. about this topic? Mevesh, I feel कि beneath this topic, beneath a lot of psychopathology, you can say, anxiety Mm, हो गई, depression हो गई, mm, substance use disorder हो गया, mm, ठीक है? इन सब की underlying cause is feeling helpless, right. powerless, Powerless. yes. Mm, और मतलब like I said earlier, I mentioned that I see a lot of people struggling in difficult relationships, and they're not just able to, you know, grow. And when mm, I say I don't really mean growing out of a relationship, mm. Growing within the investing relationship. within the relationship. Yeah, yeah, Because yeah. while you are in a dysfunctional relationship, you Mm, just have two choices. You yeah. either have to stay in that relationship and make Mm, the best of it yeah. and make the best of yourself, Mm, or you just leave the relationship. So these are two things. Fine, whatever someone chooses to be. If mm, somebody wants to be in the relationship, they mm, need to, be aware of the patterns that are mm, causing distress and that are causing and problems for growth and self-development.
and self-awareness. Well said. Hajra, I think and of course we're in the same field as therapy, so for us to talk on technical terms or use those, it's just going to slide out there. But for a layman, I'm just thinking like somebody who doesn't know these terms, is trying to make sense of what they're talking about, right? मेरा सिर्फ ये सवाल है कि, when आप बात कर रहे हो पैटर्न्स की, ठीक है ना? और ये इट्स सो इम्पोर्टेंट। सबसे तो पहली बात है कि हमें अवेयरनेस भी है कि नहीं है, बिकॉज हाजरा यू हैव टू सी लाइक रियली एक्सेप्ट व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। यू सीन फॉर सेंचुरीज और डेकेड्स और वट एवर अ सिस्टम, राइट? एंड देयर इज दिस सिस्टम that is completely failed, right? To where we are today, and for you and me to both reflect and see, I think we both would be on the same page to say कि यार, this is the family example I look up to and want to make for my family. We don't have that, right? We don't have that kind of image. We have is toxicity and manipulation and boy wali baat, learned helplessness. Either the wife is feeling or the husband is feeling or both of them are feeling and going through it separately. तो देखिए, जब आपकी the whole environment is conditioned in surviving through learned helplessness, it's very hard for you, even if you're aware, to break that pattern. Don't you think so? Exactly, Mavish. Mm. Like I mentioned it earlier also, that it is, you know, you can't see it. Yeah. It's invisible. Yeah. और ये आपकी एक inner voice जो होती है ना, Mm. especially उस पे सबसे पहले to develop awareness on that inner voice, there are a Mm. few pet sentences, ठीक है, हमारे जो होते हैं, जी. like it is what it is. Yeah. Yeah. मैं जो भी कर लूं, it's not going to help, Mm. और I'm going to fail at it. Mm. मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, Mm. इस तरह के sentences. और Mm. ये basically I happened to have a sitting with Dr. Sadakat Ali Mm-hmm. almost 20 years back or 15 years Wow. back, I think. तो वहां पर मुझे ये कॉन्सेप्ट उन्होंने समझाया था, Mm. एंड इट रेजोनेटेड विद मी सो मच कि उसके बाद से आई खैर उसके कुछ अरसे बाद से आई स्टार्टेड टू बी अवेयर कि क्या क्या ऐसी चीज है जो मुझे लर्न हेल्पलेसनेस की तरफ लेकर आती है. Mm. And Mm. then my teacher in Kinnaird College, Dr. Miss Ruxana Mahmood, Mm. she's an associate professor there. Whenever I went to her कि नहीं मैं I don't think I will be able to manage or cope up किसी भी कोई assignment होती है कुछ, she used to say कि it's all in your mind. It means that you are not convinced yourself Mm. कि मैं ये कर सकती हूँ. Mm. और एक लाशऊर तौर पर, एक Mm. अनकॉन्शियसली हम अपने आप के लिए वो सर्कमस्टांसेस पैदा कर लेते हैं Mm. जिसका आउटकम वही निकलता है जो कि हम प्रीएम्प्ट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली जो कि लर्न हेल्पलेसनेस की तरफ या फेलियर की तरफ लेकर जाता है. और फिर इंटरेस्टिंग। हमारा माइंड जो है उस चीज को इंटरनलाइज कर लेता है. लाइक आई सेड, एलिफेंट्स वाली बात जो थी राइट। कि मैं तो कर ही नहीं सकती, देखा मैंने ट्राई किया, हुआ ही नहीं. और इट्स नॉट दैट पीपल डोंट ट्राई, Obviously, ट्राई it's भी over करते हैं. time disappointment, over disappointment that you learn कि अच्छा एग्जैक्टली यार रिजल्ट तो वही आने, तो फायदा क्या करने का। You know एग्जैक्टली that. जब रिजल्ट, बिल्कुल, जब रिजल्ट वही मिल रहा है तो वो हमारे जो न्यूरल पाथवेज हमारे दिमाग में होते हैं, विच कैन बी सीन एज एक ग्राउंड में अगर चल चल के लोग लाइक वो पाथवेज बन जाते हैं ना, जहाँ पे ग्रास खत्म हो जाते हैं, तो जी। इसी तरह हमारे न्यूरल पाथवेज भी डेवलप होते हैं ओवर टाइम. राइट। और वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं, फेलियर आफ्टर फेलियर, फेलियर आफ्टर फेलियर. और उससे फिर फ्रस्ट्रेशन आती है, एंगर आता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी का सर्कल में आप फंस जाते हो कि आई एम नॉट गुड इनफ. But Haja, देखिए, I understand when you're saying that
when it comes to an individual itself, right? Whether it's an Hmm. assignment, whether it's a success, on all them, when it's just related to you. But take it when it's related to a relationship with another person, right? Then it Hmm. becomes really hard because they can, you keep on trying and trying and trying, right? And then the result is disappointment after disappointment after disappointment. Then फिर ये कहना is safe कि यार I'm going to get the same result. Do you think that's learned helplessness, or that's just you facing the reality that this person is never going to change? अमेरिश आई फील कि अगर इस तरह का कोई रिलेशनशिप हो तो आपको बेसिकली एक और तरीके से फिर देखना है कि तो लर्न आपके लिए ये हैप्पीनेस कैसे रिलेशनशिप नजर आती है रिलेशनशिप में? फिर एक लर्न हेल्पलेसनेस रिलेशन में, हाउ इज इट शोइंग अप इन अ रिलेशनशिप? इसी तरह के जब आप यू सो बॉग डाउन या उस रिलेशनशिप में लाइक या आई से people with narcissistic traits. I will not use the word narcissism or anything क्योंकि या बहुत rampantly आजकल यूज हर कोई यस narcissistic बन जाता है यस हर कोई ट्रू so you know and people are aware of that कि narcissists क्या होते हैं so I यस will be using the term narcissistic traits ट्रेट्स, या दैट मेक्स मोर ठीक सेंस, या या तो इसलिए अगर आप इस तरह की रिलेशनशिप में हैं तो हम्म लर्न हेल्पलेसनेस वो होगी कि अगर आप एक नार्सिसिस्ट के एटीट्यूड से या जो उस नार्सिसिस्ट का रवैया आपके साथ है उसको आप पर्सनली ले रहे हैं या उससे आप अ, की सेल्फ स्टीम डिस्टर्ब हो रही है लो सेल्फ स्टीम हो रहा है लो कॉन्फिडेंस हो रहा है क्योंकि लर्न हेल्पलेसनेस के साथ ये चीजें भी तो आ जाती हैं ना एंड But मोस्ट wouldn't इम्पोर्टेंटली that be with a narcissistic relation? Isn't it normal for your self-esteem to go down because this constant invalidation of your existence? There is एग्जैक्टली silent treatment. There तो is gaslighting. दिस इज वेयर अवेयरनेस कम्स इन फ्रॉम Right. दिस इज वेयर अवेयरनेस एंड द इंटरनल वॉइस प्लेज Right. और मतलब ये तो डेफिनेटली वन नीड्स टू वर्क विद अ थेरेपिस्ट इट्स नॉट Mm. दैट के इवन इफ इट्स अ लेमैन और इफ इट्स यू नो इवन somebody who has a lot of knowledge of these things वो भी गैसलाइट हो के वो True. अपने True. आप को और अपने सेल्फ को डाउट करना शुरू कर देते हैं Mm. सो वर्किंग विद अ थेरेपिस्ट इज इम्पेरेटिव Mm. और But Hajra, then again, I throw that question again on you. A person who's stuck, not even in a आप narcissistic traits वाले relationship को भी निकाल दे, but even in a toxic, unhappy marriage or a relationship or whatever, even in that, for a man or a woman or anyone for that matter, to remove themselves, knowing it's not working for them, it's really hard. और ये क्यों hard है? मैं इसलिए इसको इतनी I'm trying to keep it as real for a person who's here and is listening and is feeling helpless, right? To kind of connect with them in the sense that if they're there, I can understand that even knowing you cannot step up for yourself because it is hard. एग्जैक्टली It's तो like you're drowning, या that kind of feeling. तो मेरज यहाँ पर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज यू कैन नॉट हील इन एन अब्यूसिव इन्वायरमेंट ठीक है Mm-hmm. अगर हम कहें कि 100% हीलिंग हो जाएगी या आप फिर से एक यू नो you'll develop your self esteem self confidence वो I don't really think it's possible you see तो अगर environment ही abusive होगी तो Mm. I feel it's not, you cannot heal 100% in this environment. So, like I said earlier, कि it's like you either, अब ये तो priorities पर है कि आप what do you want from this relationship. Either you leave the relationship या फिर जो bits and pieces हैं, you pick those up, build yourself, अपने देखो अपनी work on yourself. अपने Mm. सेल्फ कॉन्फिडेंस बाउंड्रीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट Mm. आई वुड से कि Yeah, आप I एक think I बाउंड्री think रखें when you said, this is really funny, but I laughed also. Sorry, was when you said that about not being in that relationship because it's not serving you, and I was like, literally, our whole culture is based on that because, and I'm just being real. हमारे our culture
is built on a cynical humor and putting people down. Not only do your husbands or your wives, it's the parents, it's the in-laws, it's the elder doing it to the younger person. So then what environment are you talking about to remove yourself from? Because it's everywhere, it's prevalent everywhere to the T. So then for me it is, how do we get out of it? For me then, uh and for a lot of people, exiting the marriage or exiting the relationship, especially in our culture, Hajra, you and I both know it's very hard. They don't have the backup to go back to their parents' home. The father won't let them come. The brother would step up, or the relatives would stand up. So there are a lot of roadblocks for a woman to stand up for herself and say, "Ki, theek hai, I'm in a narcissistic marriage, or I'm in a toxic marriage. I'm going to break it." Even though, look at the century we're in, how advanced we've become. But for a woman to step up for herself, it's really hard because she doesn't have the backing, right? So my thing would more be then, जैसे आपने भी बात की, is you've said that again and again and again, is that awareness. कि अच्छा, I need to be aware. Maybe I can't exit this relationship because I'm stuck in it, right? And being real with yourself that I'm stuck in it. I don't have the fallback. I need to be aware where I'm going to draw jo aapne ka boundary, right? Draw the boundary, and not let what is thrown at me make it about me. I'm not a failure. I'm not a whatever is being thrown, because it's just not narcissistic traits. It's constant invalidation of your existence in our culture, where everybody likes has 2 cents to say about who you are or how you need to present yourself. So I think if I were to be real, then it would be to say that work on yourself, know who you are. So when somebody says something, because that's not going to stop, is you know that it's not about you, and it doesn't take you in that spiral of anxiety or depression or self-doubt, or l- drags you down from your confidence to a point where it brings you into having low self-esteem. Would you agree with me? So these are lots of suggestions. I will try to, give you a very a general answer or Sure, take sure, it one sure, by sure. one. Yes. Bilkul, Yeah. bilkul. Yeah. Okay. So, सबसे पहले जो चीज while you were speaking, what came up for me कि हर चीज, ठीक है, हर जो एक situation होती है, जी. it doesn't require a response, True. ठीक है. सही बात है जी. हाँ. और जरूरी नहीं है कि आपको लाइक यू सेड कि यहाँ हमारे एक साउथ एशियन कल्चर में ह्यूमर जो है जी. वो बहुत वाइडली यूज होता है कि टॉन्ट कर दिया फ्रेंड्स ने आपस में एक दूसरे को ह्यूमरसली कोई बात कर दी एंड हम्म. दैट्स आल्सो अब्यूज इफ द पर्सन इज नॉट टेकिंग इट नाइसली. तो Right. बिटवीन मैं ये कहूंगी कि एक अगर एक सिचुएशन है, जी. ठीक है, हम्म. और बिटवीन दैट सिचुएशन एंड योर रिस्पॉन्स वो जो स्पेस होती है ना, द हम्म. स्पेस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, Right. अगर आप उस स्पेस को मास्टर कर लो, बिकॉज दैट इज वेयर योर पावर लाइज, True. True. ठीक है, हम्म. तो बहुत कुछ रिजॉल्व हो सकता है. हम लोग करते हैं नी जर्क रिएक्शन, हाँ, that is also ठीक not है, right. Agreed. Yeah. और बहुत दफा ये होता है कि वी आर फीडिंग आवर माइंड अपनी स्टोरीज बना बना के, Yes. ठीक Hmm. है, Yeah. और वो जरूरी दैट्स नॉट रियलिटी, दैट इज आवर परसेप्शन, ठीक है, जो Yeah. हम अपने माइंड को फीड कर रहे होते हैं. Hmm. तो फिर हमारा माइंड भी Hmm. उसी इंफॉर्मेशन के थ्रू ऑपरेट Hmm. करता है, सही बात है. यू True. सी, Yeah. Yeah. एंड दैट इज हाउ इट रिस्पॉन्ड्स. Yeah. सो बेसिकली अगर मैं इसको इस सारी चीज को एक द जस्ट ऑफ इट वुड बी टू जी. रिक्लेम द स्पेस बिटवीन स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स.
Now, stimulus and the response is something a layman over here is not going to understand. So you need to like really break it down, please. That's why I पहले मैंने कहा कि एक सिचुएशन है, एक G. नापसंदीदा सिचुएशन है, ठीक है, which is not of your liking, Hmm. and you have this urge to respond, ऐसे करके मैं respond कर दूं, फौरन मैं ये Hmm. बात कह दूं, उसने मुझे ऐसे किया, मैंने फौरन ये जवाब दे दिया, Foreign के और फिर जवाब वो दे. चीजें एग्जैक्टली Hmm. और ये वो तो चीज बड़ी that's एक your ego playing अप्रिशिएट out. Now that's your ego self playing out. एग्जैक्टली You know that's एग्जैक्टली not true बिल्कुल about you. Yeah, yeah. एग्जैक्टली सो दैट इज Yeah. व्हाई आई एक्सप्लेन्ड इट कि वो Hmm. हमारा ईगो प्ले अप कर रहा होता है, और जो स्टोरीज, क्योंकि हमारा माइंड इज अ स्टोरी मेकिंग मशीन, Yeah, yeah. ठीक है, जो हमारे माइंड ने सोचा होता है, जो परसीव किया होता है एक Hmm. चीज, Yeah. उसके थ्रू वो Hmm. रिस्पॉन्ड करता है। Yeah. उसने ये कहा, मैंने ये कह दिया, मैंने फिर वो कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, Hmm. सो इट्स बैक एंड It फोर्थ becomes एंड a इट vicious डजंट cycle. Yeah. more Of trying exactly to and prove most yourself. of exactly and Hmm. most of the time it's not going anywhere, it's not leading anywhere, Yeah. conflict for the sake of conflict, Yeah. Yeah, that makes sense. तो Somebody ये said एक something here. I have been there. If you return back to your parents' house, they will make you feel second citizens unless they accept the bitter reality. Yes, yes. I'm sorry if you had to go through that, and that is true. It's really hard for a woman. It's not easy in our culture for a woman to stand up and say, "This is not working for me. I'm gonna check out of this marriage." So she really doesn't have a lot of choices, and this is not learned helplessness. This is really the reality of what a woman in our culture faces for all kinds of levels, at every level, that she can't exit. The people won't let her exit, so it becomes that might translate as learned helplessness, but I think it's more of ground reality. Sweetheart, can you close the door for me? Yeah. okay, so I'll explain the dynamic going on here. देखो, पेरेंट्स के अपने पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, सही. ठीक है. you see the जी जी. cycle, I'll just बिल्कुल. break it down for you, या. ठीक है, and that is also they're helpless in हम्म. the face of such a situation, या. ठीक है, obviously one wants the best for their children, एक जो एक perfect, आप कह लो एक लड़कियों के लिए जो एक visualize, अब things are changing, but हम्म. this I'm talking about like हमारी generation या हमसे जो थोड़ा पिछली generations थी, so what parents wanted for their girls was to settle down, हम्म. At ठीक any है, cost, at whatever cost that एट was. एनी एग्जैक्टली Yeah. एग्जैक्टली बिल्कुल, Yeah. Yeah. क्योंकि वो चीज उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखी होती है, हम्म. और वो उनके जो एक माइंड में ऑफ अ हैप्पी लाइफ, ऑफ अ हम्म. कंप्लीट लाइफ का जो एक मैप होता है, उसके अंदर मैरिज टेक्स द फ्रंट सीट, Yeah. दूसरी ठीक है, तरफ अगर लीन तो करेंगे तो लर्न हैप्पीनेस ही आएगी. एग्जैक्टली exactly, वो लर्न हेल्पलेस आएगी, और हाँ. इसी तरह फिर वो उनकी एंजाइटीज होती हैं हम्म. कि आगे जाके क्या होगा, कैसे हम्म. होगा, कैसे, so many things in आई different थिंक Raja, families. as you're saying, it's just kind of making sense कि ये एक लूप है. जिस तरह आपने कहा ना, for the parents it's their wiring that is projected on us, that is instilled in us, is Yes. that ये learned helplessness है कि शादी, the marriage has to work. There is no other Hmm. way. The other way is feeling helpless, because अब where how will she survive if she has kids? What will she do? Who will accept her if she's a divorcee without kids? So it's that mindset कि यार अगर if that marriage is not going to work, बाकी हर तरफ मायूसी है. The other way is मायूसी. Exactly. तो बस वो सीख लिया, वो बिल्कुल. एक पैटर्न, एक सॉलिड पैटर्न हो गया. अब that's the pattern, and then जिस तरह you said it so beautifully, just made sense कि yeah, that's the loop. That's the loop, and that's where, because the parents think that there is no other way. That's their learned helplessness, right? Would Yeah, you agree? totally. Totally. Fascinating. Totally. That's Yeah. fascinating. Um, so then, how would, let's say I'm here, how would you help me recognize if I'm stuck
in this kind of behavior? ओके, तो सबसे पहले महवेश ये है कि आप इफ यू स्टक इन दिस बिहेवियर यू नीड टू कैच योर इनर वॉइस, कि ठीक है। आपकी अंदर की आवाज जो है वो हम्म, आपको क्या कह रही है, वो आपसे किस तरह बात कर रही है, कि वो क्योंकि एट टाइम्स वो वॉइस होती है हमारे इर्द गिर्द के लोगों की, जो हमने सुना होता है while growing up, those yeah, messages, parental messages. And when I say parental messages, I mean जो बातें हमने अपने इर्द गिर्द के लोगों की सुनी लोगों होती हैं, से सुनी टेलीविजन है। से सुनी हम्म, होती हैं, स्कूल के मैगजीन्स, या माहौल अब से, सोशल या स्कूल के माहौल से, सोशल यस, मीडिया, ठीक या है, उससे वो एक चीज बन जाती है और वो फिर हमें लगता है कि वो हमारी वॉइस है। हम्म, एट टाइम्स वो वॉइस इतनी ओवरपावरिंग हो जाती है कि वो हमें अपनी वॉइस लगती है, like हम्म। it's coming from within and this is You think how that what it's we are. you, but it's not you. Exactly, So the exactly. inner voice So would be your intuition, would you say that? the sorry, Would you say कि जो inner voice है, is that our intuition? no, 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 Okay. no, I wouldn't say it's the intuition. It's just कि एक सिचुएशन के बारे में जो हमने अराउंड अपने अराउंड से आइडियाज जो गैदर किए होते हैं, जी, कि अगर ये सिचुएशन है तो इसमें एक परफेक्ट तरीका क्या है टू गो अबाउट इट, ठीक है। ठीक है, ठीक तो है। वो जो हम हमारा एक आइडियाज गैदर होते हैं उससे हमारे माइंड मैप्स बनते हैं, नक्शा बन जाता है ब्रेन जी, का, बिल्कुल, और ट्रू। फिर उस नक्शे को देखकर हम नेविगेट करते हैं कि हमने किस तरह से करना है, और फिर वो वॉइसेस हमें जो है सोसाइटी की, हम्म, कि इस तरह होगा तो तुम कंसिडर अच्छे होगे, या इस तरह एक परफेक्ट मदर कैसे होगी, एक कंप्लीट वुमन आप तब हम्म, बनोगे जब ये चीजें। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू कैच दैट इनर वॉइस, यू हैव हम्म। टू बी अवेयर ऑफ इट, और हाजरा, यहीं से ही, या, सॉरी मैं और आपकी बात लाइक यू काट रही हूँ। आस्क्ड मी, या, ये जो आप इनर वॉइस की बात करें, इफ वी वर टू, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू रियली अगेन मेक इट मोर इजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। आपकी जो आज जिस तरह आप एक्सप्लेन कर रहे हो इनर वॉइस की, ये ऐसे ही है कि हाजरा इन द मोमेंट आपने मुझे कुछ कहा, ठीक है ना, बट इन माई हार्ट आई नो दिस वॉज रॉन्ग, but on the face of it I'm accepting it. So you're saying listen to that inner voice that's saying different than how you are accepted to show up. Is Would that be a right way to put it? एग्जैक्टली, यस, ठीक। यस। Okay. अब like Mavish, now I know that you are very self-aware because obviously we're colleagues. So इसीलिए you know how to differentiate between your voice and the inner voice of that critique. Yeah, yeah। लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ आप नहीं पता अच्छा, चलता। आई बिल्कुल नहीं, आई जस्ट गिव यू लिटमस टेस्ट। Yes। आप फेसबुक खोलो, ठीक है, जी। उसके अंदर जो ग्रुप्स बने हुए हैं, लाइक देयर सर्टेन ग्रुप्स फॉर women, Right। ठीक है, जहां Mm-hmm। पर लड़कियां अपनी प्रॉब्लम्स पोस्ट करती हैं, Yeah। जस्ट सी द हेल्पलेसनेस इन दोस प्रॉब्लम्स, Yes, 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 ठीक, yes। जस्ट गो थ्रू दोस पोस्ट, Yeah। दे जस्ट डोंट नो कि वो किस तरह से नेविगेट अपना रिलेशनशिप, या अपने करना है, कि किस तरह से बट हाजरा ये दे हकीकत नीड टू। देखिए ना, दिस इज वही बात आ गई, दिस इज द रियलिटी ऑफ, मतलब ये हकीकत है हमारी, बीइंग अ वुमन, एंड मी, आई मीन बीन थ्रू दैट माई सेल्फ, इज दैट when when we are really feeling helpless and stuck in an unhappy relationship, चलिए relationship की बात कर लेते हैं, वी आर फीलिंग हेल्पलेस बिकॉज हमें कभी वो सपोर्ट दिखी ही नहीं, हमें नजर ही नहीं आ रही ना, वी डोंट सी दैट इमोशनल सपोर्ट, दैट if I were to use my voice and say, oh, I'm unhappy, and there is no scar there to prove that I'm not happy, just unhappy. I'm not talking about toxic marriage, I'm not talking about narcissistic abusive marriage, I'm not talking about physical abuse, I'm just generally saying, just getting up and saying I'm unhappy in this marriage, uh, do you think you get that support? So the reality is that helplessness comes because the visibility of that support is not there, it really is not there. महविश, आई वुड से कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो
Hmm. If you're feeling something, it is valid. नहीं, वैलिडेशन तो You है, वो तो see, श्योर, या अपने आप को वैलिडेट देखो अब you सही बात है। if you the more you seek external validation, the more you'll keep on spiraling down this loop. हम्म। So सबसे पहले, and it's very easy to slip away, बहुत या बहुत आसान होता बिल्कुल है। सबसे सही। पहले आपने अपने आप को बार बार and it's not easy, it's या not easy, इट्स नॉट। आपने अपने आपको बार बार वैलिडेशन देनी है कि मुझे अपनी फीलिंग्स के लिए किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। हम्म। If I am feeling it, so that means कि it is there. हम्म। सही बात है। और you have to catch yourself in that loop. ठीक है, हम्म। नेगेटिव जो सेल्फ टॉक है वो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जो हमारे यहाँ स्पाइरल सीढ़ियां नहीं है होती, जी हाँ, जी हाँ। जो अक्सर घरों के पीछे लगी होती है, यस, यस। अब हमारे नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है ना, वो इसी तरह ही होती है कि या आप उस स्पाइरल में नीचे गिरते जाते हो, गिरते जाते हो, गिरते जाते हो। ट्रू। ठीक है, तो वो या। उसमें आपने यू हैव टू कैच योर सेल्फ देयर। और हम्म। वैलिडेशन जितनी आप एक्सटर्नल मांगोगे, वो आपको प्रॉब्लम सो सही यू बात। देती रहेगी। सो यू हैव टू बी श्योर ऑफ योर सेल्फ कि मैं ये जो कर रही हूँ, अ, हम्म। यही एक दिस इज वेयर आई स्टैंड माई ग्राउंड। हम्म। और there are so many people to validate you also. Why do you look for validation? एक जहाँ ही नहीं इंसान मिलनी। है, जहाँ नहीं जहाँ नहीं मिलनी, मिलनी उधर ही देखनी है। एग्जैक्टली, दैट ये भी बड़ा एग्जैक्टली। मसला है, ये भी बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि अच्छा, और यहाँ पर आई वुड गिव इट दैट कि अब जिस इंसान से आप वैलिडेशन मांग रहे हो, हम्म। उसमें ये एबिलिटी भी है आपको दिली है, हाँ। वैलिडेट करने की या नहीं। सही बात है, ट्रू। या। क्योंकि अब वो भी तो परफेक्ट इंसान नहीं है ना, जिससे आप हम्म। वैलिडेशन मांग रहे हो। उसके भी अपने पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे, एंजाइटीज होगी, गिल्ट होगा, आई डोंट नो, सो मेनी थिंग्स। हम्म। तो यू नीड टू नो कि उस इंसान में एबिलिटी है वैलिडेट करने की, आपके लिए एक स्पेस बनाने की, कि जहां पर वो हम्म। आपको वो स्पेस दे सके। अगर नहीं है तो यू हैव टू रिक्लेम दैट एंड यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ। या यू हैव पीपल अराउंड यू, या। यू हैव योर फ्रेंड्स या कोई कॉलीग्स हो। या मतलब देयर सो ऑनलाइन, मेनी पीपल। ऑनलाइन आप आके अपने आप हाँ, को सेल्फ एजुकेट कर लो, टू मेक एग्जैक्टली, सेंस हाँ, ऑफ व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। यू डोंट नीड, if you टोटली, think that you can't rely on people, I mean social media is so big now, so use that एग्जैक्टली। to your एंड advantage. बिल्कुल, एंड जस्ट बाय बीइंग ग्रेटफुल, हम्म। ग्रैटिट्यूड जो है, टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, आई थिंक इट कैन डू वंडर्स। जस्ट मतलब ये अगर आपने आप बात की सिर्फ, ना, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, मैं सिर्फ सोच रही हूँ दैट व्हेन यू आर इन लर्न हेल्पलेसनेस, ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना बिकम्स रियली हार्ड फॉर समबडी, राइट? एग्जैक्टली, इट या। इज हार्ड, इट इज हार्ड। मतलब देखो, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, सिंस यू नो रिपीटिंग सेइंग के, या, नो नो एंड आई प्लीज। एम श्योर यू नो दैट टू, जी। कि अब जैसे हम अपने लिए कंफर्ट जोन बना लेते हैं। ठीक हम्म। है, अब वो हम्म। कंफर्ट जोन जो है, वो जरूरी नहीं है कि वो एक सेफ स्पेस हो, जहां पर आप हम्म। सेफ फील करते हो फिजिकली एंड इमोशनली। हम्म। ठीक है, वो ऐसी जोन हो जो आप के लिए कंफर्टेबल हो। ठीक है, हम्म। it हम्म। can be an abusive relationship, a हम्म। place where you don't feel emotionally and physically safe। ठीक है, हम्म। वो हम्म। भी आपके लिए कंफर्ट जोन बन जाती है, क्योंकि वो आपके बिल्कुल लिए फेमिलियर फेमिलियर हो फेमिलियर गया हो है। जाती हाँ। है। हाँ। गोइंग बैक टू द न्यूरल पाथवेज जो मैंने बात की थी। हम्म। ठीक है, वो फेमिलियरिटी आपको देती है वो जोन जो है। और हम्म। उस कंफर्ट जोन से निकलना, हम्म। यू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज। या। कि उस कंफर्ट जोन से निकलने के लिए आपको कितने हर्डल्स, बैरियर्स आपके हम्म। अपने, हम्म। उनको क्रॉस करना पड़ता है। या। या। और फिर जाकर आप कहीं यू स्टेप इनटू द ग्रोथ जोन। Yeah, yeah. There's this saying that's coming in my head where you say that choose your heart. Divorce is एग्जैक्टली, hard. Staying in a toxic marriage is. So choose your heart, and then फिर उस पे लग जाओ कि उसको किस तरह मैंने अपने लिए बेहतर करना है, whatever path that is for you. You know, that टोटली, kind of thing. बिल्कुल, Yeah, that's बिल्कुल, really interesting. Uh, yeah. in a relationship,
how does learned helplessness show up, and what kind of effects it has on one's mental health? Okay, so this is a very, very huge topic. So I'll Okay, just say कंसाइज करके थोड़ा दे सा देना. कंसाइज करके एक बहुत छोटी सी समरी में बना देती हूँ. Sure, sure. वो यही है कि आप वही चीजें रिपीट करते रहो. ठीक है कि एक आप डिसफंक्शनल रिलेशनशिप में हो और वहां expecting the same thing out of that person. ठीक है. I will take the example of validation that you gave. जी. We'll take it further from there. ठीक है कि आप you're in a relationship और आप you're asking for validation हर छोटी बात पे. ठीक है. एक आपको अपने like हस्बैंड से आपको वैलिडेशन चाहिए कि मेरे कपड़े ठीक है, मेरे कपड़े अच्छे हैं, या मैं there's so many things, खाना या अच्छा पका है. खाना अच्छा पका है. So या exactly. अब आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कहेगा हाँ हाँ बहुत अच्छा पका है या बहुत अच्छी लग रही हो या वो, और अगर वो एक वन लाइन में आंसर दे दे या वन वर्ड में हाँ अच्छा, ठीक है, तो द पर्सन विल बी हार्ट ब्रोकन कि ओ मैंने इतने खाना बनाया और ये क्या I'd made so much effort and this is the response I get. या ठीक है. तो आप फिर उस स्पाइरल में गिर जाते हो, ये क्या बात हुई, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने ये किया वो किया ऐसा ऐसा वैसा, सो मेनी थिंग्स. हमारा जो फिर एक माइंड जो है वो स्टोरीज मेकअप करना शुरू हो जाता है. सो दैट इज वेयर यू हैव टू कैच योरसेल्फ कि आप अपने आप को वैलिडेट करो. आपको पता है खाना अच्छा पका है, या अगर नहीं भी अच्छा पका तो आपने मेहनत की है. यू You gave your best. you invested exactly, you gave your best and stand that ground कि हाँ मैंने इसमें टाइम इन्वेस्ट की है, मैंने अपना आप इन्वेस्ट, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है. you see, so इस तरह की चीजें एक्सपेक्टिंग नो बीइंग मतलब कंप्लीट विद इन योरसेल्फ. Yeah, yeah. और फिर वही बात आ गई कि पैटर्न्स आप देखो कि अगेन ये एक मतलब आई थिंक कि एक थेरेपिस्ट की हेल्प के बगैर ये सब करना काफी मुश्किल. I think पहली चीज तो before even a therapist comes in is that awareness that something is wrong here, Exactly. or Yes. something needs to change here. And Hajra, you put it so beautifully is कि जो आप ये बात कर रही थी कि the thing where we're seeking that validation, we need to stop seeking. Then it's very hard for somebody who has who's never taught in their entire life, और लड़कियों को खास तौर पे self-reliance and know who you are in your skin, be comfortable. It's not taught in our culture. So for her to know that, it's really hard because उसकी shattered self ही शादी में जाती है, और उस shattered self में ही उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां बिल्कुल डालती जाती हैं कि she completely, अगर बिल्कुल. थोड़ा सा उसका sense of self घर में था भी अपने parents के, she loses that. She becomes invisible in her in-laws or in her marital life. So I think with saying all that, I think it's more about your faith. I think आपका ईमान comes in Exactly. so prevalently It that does. depend on God, trust God, and make him the source of your validation. That he's there, he sees Exactly. you. बिल्कुल Because I know been बिल्कुल. there, done that वाली situation. और वही वाली चीज है, it's easier said than done when you're going through that emotional turmoil. You do want connection, you do want your family or people that are close to you to understand what you're going through. So it makes sense कि आप अपने आप को कह सको यार मैं पागल नहीं हो रही, ये असल में मेरे साथ हो है, all that kind of thing. So I think even wanting that is okay, but also saying that if I don't, if I'm unable to receive that, I have God, and God sees me in my pain, God sees me in my suffering, God sees I made this food or I made this effort or what I did, and that dialogue that जो जिसको आप inner voice कह रहे हो, I would say that dialogue can become more stronger if you build that connection with God in that
communication. Definitely, Mehvel. Yeah. It helps tremendously क्योंकि when you're connecting with God, ठीक है, Hmm. तो आप gratitude भी आप you're grateful बिल्कुल. to Him Yeah. for so many things. और वो जब आप देखना शुरू होते हो तो फिर आपको पता चलता है कि आप कितने ज्यादा blessed हो. हम्म, You know, वो in लर्न that हेल्पलेसनेस थोड़ी सी fashion. कम हो जाती है, नहीं हाजरा, हो बिकॉज देन यू जाती हैव है, गॉड. बिल्कुल या. बिल्कुल होती है, या. बिल्कुल होती है, या. बिल्कुल होती है. Definitely, that's what happens. बिल्कुल. वंडरफुल. और एट टाइम्स लोग लर्न हेल्पलेसनेस अपनी आइडेंटिटी भी बना लेते हैं. बना लेते एंड हैं. देन इट्स फिर उससे भी ब्रेक फ्री करना मुश्किल हो जाए. मुश्किल. Anyway, I think अगर हम इसको भी अगर अगर मैंने ये if I open this topic is if somebody has that identity, how to break it, it will go another stretch out. So we'll just kind of Yeah. like wrap this session up. But Hajra, anyone here listening, whether it's their identity, whether they're stuck in this loop, uh, what is the one thing you would want to say to them? I would tell them that the cage, the door is open, and you just have to, gather some courage, um, psycho-educate yourself a little bit, awareness थोड़ी सी develop करें, and the world is yours. You can step out of that cage. Amazing. Thank you so much, Hajra. So, anyone here who's feeling helpless, who's feeling stuck, I think you've already taken the first step by coming forward and listening to this conversation. Me and Hajra are sending you all so much of love. Thank you for coming in and joining us. Hajra, thank you for your time. Uh, You're most there's welcome. so many people here who would love to connect with you. What kind of programs do you offer? How can people connect with you for your services? Well, I am, as I mentioned earlier, I'm a EMDR practitioner, psychotherapist, and I practice at therapy chapters. And I have a page by Counseling Concerns by Hajra, both on Instagram and Facebook. Okay. So they can catch me there. Yeah. Okay, guys, you heard her. This whole conversation will be on my Instagram and on my YouTube channel as well. So you can go and find her links over there. Thank you so much, Hajra. Thank you, everyone. Have a wonderful rest of the evening. Thank you so much, Mavis, for having me. Allah It was Hafiz. great talking to you. Thank Allah you. Hafiz. Allah Hafiz.